So today we are going to start our seventh lecture. Continue with the basic set theory, right? In previous lecture, we have covered concept of set, describing sets, member and equality of set, listing method, cardinality of set, types of set, and in the last we have covered Venn diagram. And today we are going to cover set operations, basic set identities, proof methods, algebraic proof examples, disproving an alleged set property, finite and infinite set pigeonhole principle, and in the last we will cover concatenation. Sorry. So in set operation, we are performing different. We can perform different operation between sets. Uh, the first one is union. Let a comma b be subset of some universal set U. Means ये a और b जो है वो सबसेट हैं किसी भी यूनिवर्सल सेट U के. In the form of Venn diagram, we can say it, and this rectangle is representing the universal set, and these two circles are representing the set A and set B, right? The following set operation create new sets from A and B. So when we will perform a union between the A and B, then we will got the answer in which we have the all the elements which are present in set A and set B. In terms of union, A union B is equal to X belongs to U such that X belongs to A or X belongs to B. मीन्स एक X जो है वो यूनिवर्सल सेट से तो लाजमी बिलोंग्स करेगा और वो X जो न्यू सेट बनेगा वो X या तो A से बिलोंग्स करता होगा या फिर B से बिलोंग्स करता होगा. तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ in the form of visualization, we can write the answer of A union B is A इस A सेट को भी हमने कलर्ड कर दिया है और इस B सेट को भी हमने कलर कर दिया है, राइट? सो कंबाइनली इसको हम रीड करेंगे A union B and this rectangle is representing the universal set, right? So because we are denoting or representing only A union B, so this A circle and this B circle is colored. और ये यूनिवर्सल जो है ये इसमें इंक्लूडेड, ये जो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में होंगे ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ वो एलिमेंट इंक्लूड होंगे जो ए में है और बी में है, राइट? एन एग्जाम्पल वन, अगर ए सेट जो है वो इक्वल है 1,2,3 के और बी सेट जो है वो इक्वल है 1,2,4,5 के, तो यूनियन बिटवीन ए एंड बी विल बी 1,2,3,4,5, राइट? इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम वी कैन रिप्रेजेंट इट एज वी कलर दिस बोथ. जैसे हमने यहाँ पे इसको कलर कर दिया है, लाइकवाइज हमने इधर भी इसको शेडेड कर दिया कि ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ए सेट है 1,3, राइट? और ये बी सेट है 1,2,5, 4, 4,5, 1,2,4,5, राइट? सो वेन डायग्राम में जब हमने यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया बिटवीन दिस टू सेट, तो इट विल बिकम 1, 2, 3, 4, 5, राइट? In intersection, A intersection B is equal to A belongs to U such that X belongs to A and X belongs to B. मीन्स यूनियन में जो है या तो कोई भी एलिमेंट या तो ए सेट से बिलोंग करे या बी सेट से बिलोंग करे, तो वो हमारे जो न्यू सेट होगा या आउटपुट वैल्यू जो होगी उसमें वो एलिमेंट इंक्लूड होगा, राइट? लेकिन इंटरसेक्शन की टर्म्स में या तो मीन्स वो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए because we are performing end over here. So end इधर जो रिप्रेजेंट करता है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो वो एलिमेंट ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो. लाइकवाइज जैसे हम कंजंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे लॉजिक में कि वो जो जब
जब दोनों प्रोपोजिशन हमारी ट्रू होंगी तो हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू होगी ट्रू होगी, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। सो इधर इंटरसेक्शन जो है कि जब दोनों, वो हम न्यू सेट के अंदर वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, राइट। So in the form of Venn diagram, we can represent it as this whole is the A set and this second circle is the B set, right? And this rectangle is showing the universal set. So we are taking an intersection B over here. So this is the common portion between A and B. So this portion only representing the A intersection B. Means these elements are same in both side A and B. So on the basis of this previous example, if we are taking 1 comma 2 comma 3 in place of union, we are using intersection 1 comma 2 comma 4 comma 5. So the output of the intersection will be 1 comma 2. Only this 1 comma 2 will be the shaded area, right? So the and the difference between A minus B means we are excluding B from A, right? In other form we can write it as A backward slash B, right? So X belongs to U, say that X belongs to A and X does not belongs to B. Means this whole is representing the universal set, and A minus B, this is the portion which is representing the A minus B, and this is the B set, this is the A set, and this is the portion which is representing the A minus B. This colored portion, red colored portion, is representing the A minus B portion, right? So example of intersection is that if we are having a set A 1 2 3 and if we are having a set B 1 2 3 4 5, so the intersection or the same element between these two sets are 1 comma 2, right? So in the form of Venn diagram we can write it as this is the only shaded portion 1 comma 2. This is the only common portion between set A and set B, right? And in the example of say difference of equation is that 1 comma 2 comma 3 minus 1 comma 2 comma 4 comma 5. The when we minus b in a, then this 1 minus 2 1 comma 2 will be discarded from set a and only 3 will remain, right? So here we have 3. So this portion is representing the a minus b, right? Complement of S means is, as I told you, and this circle is representing the uh, A set, and this circle is representing the another B set, right? So we are performing complement. Complement means we have to minus A from universal set, and then when we minus the A and universal set, right? So the and this all area will be shaded, and this is the only A complement, right? This is the this blank portion is representing the A complement, and or U minus A, right? So that is why this portion is blank and all are shaded. Means ये इसमें means जब होल में से इधर हमने बाकियों को शेडेड क्यों नहीं किया है, राइट? क्योंकि इधर हम इन दो सेट के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, इस यूनिवर्सल सेट से इनका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर रहे हैं, तो इस वजह से ये ए सेट हमारा ब्लैंक है, बाकी यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट्स जो होंगे रिमेनिंग रहेंगे। The Venn diagram of complement मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट का ये पूरा जो रेक्टेंगल है हमारा, ये यूनिवर्सल सेट है, और ये पोर्शन जो है हमारा ए सेट था, तो जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट किया तो ये सेट हमने ब्लैंक कर दिया, राइट? तो ये पोर्शन जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। Cartesian product. A new set can be constructed by associating every element of one set with every element of another set. Means अगर हमारे पास दो सेट हैं और हम by applying Cartesian product
अगर हम न्यू सेट बना रहे हैं तो हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे दो सेट पे, तो एक पहला एलिमेंट हम ए सेट का उठाएंगे और उस दूसरा पहला एलिमेंट बी सेट का उठाएंगे, फिर पहला एलिमेंट ए सेट का उठाएंगे, दूसरा एलिमेंट ए सेट का पहला एलिमेंट ए सेट का उठाएंगे, फिर दूसरा एलिमेंट बी सेट का उठाएंगे, राइट, ऐसे सो ऑन। मीन्स एक एलिमेंट हम ए सेट का उठाएंगे और एक सेट बी सेट एक एलिमेंट बी सेट का उठाएंगे और उसकी बेसिस पे हम जो है ना ऑर्डर पेयर बनाएंगे, बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, राइट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, राइट, a comma b in the form of a comma b site a is the member of a and b is a member of b, means अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, तो हम उसके जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ऑर्डर पेयर जो हम बनाते हैं वो एक एलिमेंट हम ए का उठाते हैं और फिर एक एलिमेंट हम बी का उठाते हैं, उसकी बेसिस पे हम जो है ऑर्डर पेयर और एक कंप्लीट न्यू सेट क्रिएट करते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स में लेट सपोज ये 1,2 जो है हमारा ये ए सेट है और रेड कोमा वाइट जो है हमारा बी सेट है, तो नाउ वी आर परफॉर्मिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो हम पहला एलिमेंट उठाएंगे ए का, राइट, और पहला एलिमेंट उठाएंगे बी का 1,रेड, देन हम पहला एलिमेंट उठाएंगे ए का और सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे बी का, फिर हम सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे ए का एंड देन फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं बी का और फिर सेकेंड एलिमेंट ए का और सेकेंड एलिमेंट बी का। तो ये हमारे पास जो न्यू सेट बना है ये इन द फॉर्म ऑफ दिस ऑर्डर पेयर, ये न्यू सेट ये हमारा शो कर रहा है कार्टेशियन बिटवीन दिस टू सेट्स, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अप टू हियर? अनदर एग्जांपल जो है 1,2 कोमा ग्रीन, मीन्स ये ए सेट है हमारे पास, रेड कोमा वाइट कोमा ग्रीन ये हमारे पास बी सेट है, right? So now we are taking first element of A set and first element of B set, and we are making the pairs, right? So the pair will be 1, red, right? Then again we will take the first element of A set and the second element of B set. Then the pair will be 1, white. Then again first element of A set and third element of B set. The pair will be 1, green. Likewise 2, red, 2, white, 2, green, and green, red, green, white, and green, green, right? So we are applying Cartesian product between this two sets, and the output, the new set is this one, right? Again 1, 2, Cartesian 1, 2 means if we are applying Cartesian product between the same set, then the ordered pair will be 1, 1, 1, 2, 2, 1 and 2, 2 मीन्स हम पहला एलिमेंट ए सेट का उठाएंगे, इसका भी पहला एलिमेंट उठाएंगे तो 1, 1 हो जाएगा, इसका पहला एलिमेंट उठाएंगे, इसका दूसरा एलिमेंट उठाएंगे 1, 2 हो जाएगा, इसका पहला सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे, इसका फर्स्ट 2, 1 और इसका सेकेंड तो 2, 2, राइट। नाउ it is clear to all of you up to here. Let's suppose here we have a set a is equal to 1, 2, 3, right, and b is equal to 1, 2, 3 and up to 6, right? Means in B we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and in C we have 1, 2,
B we have 8 element, 1 2 3 4 5 6 7 8, right? So what will be the A minus B? A माइनस बी जो हमारा इक्विवेलेंट होगा वो नल सेट के इक्विवेलेंट होगा, राइट? वो नल सेट के इक्विवेलेंट होगा या एम्प्टी सेट के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि जब ए माइनस बी करेंगे तो बी में से ए को माइनस करना है और बी में 1 2 3 प्रेजेंट है, राइट? सो 1 2 3 जब हम डिस्कार्ड करेंगे तो ए में रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचता है, राइट? सो that is why a minus b will be null set, right? Now we are performing the b minus a. What will be the remaining? Yes, जब हम b माइनस ए परफॉर्म करेंगे तो अब हम a को b में से माइनस कर रहे हैं, तो 1 2 3 जो है वो b में से डिस्कार्ड हो जाएगा, 1 2 3, और रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगा वो 4 5 6 रिमेनिंग बचेगा। हमारे पास जो बचेगा 4 5 4,5,6 हमारे पास रिमेनिंग इसका, ये इसकी इसका आंसर ये है, राइट? सो when we a and b subset of c, what can you say about a union b and c? So what will be the output value of this expression a union b and c? जैसे मैंने आपको बताया कि सेट्स के अंदर और जो होता है, और वर्ड जो होता है वो आपके यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और एंड जो होता है आपके वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो this expression will become a union b intersection c, right? Intersection c. So when we will जब हम ए यूनियन बी परफॉर्म करते हैं, हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू आती है वो 1 2 3 4 5 6 मीन्स 1 2 से लेके अप टू 6 तक वैल्यू आती है, राइट? ए यूनियन बी की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 2 6 है, राइट? सो और सी की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 2 8 है, राइट? So when we will perform the intersection between A union B and C, the output value will be, what are the same element between A union B and C? इन इंटरसेक्शन में हम जो है सेम एलिमेंट को देखते हैं, तो हमारे पास ए यूनियन बी जो हुआ है 1 2 6, राइट? सो द आउटपुट वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन विल बी 2 1 2 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, then this is the answer of this third expression, right? So what is the output value of this expression c and a intersection b? सो जब हम सी इंटरसेक्शन ए परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो सी इंटरसेक्शन आएगा वो 1 2 3 आएगा, राइट? 1 2 3 आएगा हमारा, जो सेम एलिमेंट है बिटवीन सी एंड ए is 1 2 3, right? And again we are performing the intersection between these two sets, so the output of this whole expression will be 1 2 3, right? I hope this is clear to all of you. Right, law of sets. As we have last in logic, same wise we have different laws in set. So first law is commutative law. A union B is equal to B union A, right?
मीन्स अगर हम ए यूनियन बी परफॉर्म करें या बी यूनियन ए परफॉर्म करेंगे, इन बोथ कंडीशन वी विल गेट द सेम आंसर, राइट? So if we are performing A intersection B or B intersection A, in this both condition we will get the same answer. In associative law, if we are performing A union B union C, so पहले अगर हम ये परफॉर्म A यूनियन B परफॉर्म कर लें और फिर बाद में हम उसका यूनियन C के साथ परफॉर्म करें, तो जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा कि पहले हम B यूनियन C परफॉर्म करें और उसका यूनियन A के साथ परफॉर्म करें, right? So in case of intersection, if you are performing A intersection B and पहले हम A intersection B परफॉर्म करें और फिर उसका intersection C के साथ परफॉर्म करें, या A B intersection C परफॉर्म करें और उसका intersection जो है A के साथ परफॉर्म करें, तो in both condition we will get the same answer, right? In distributive law, if you are performing in distributive law, if you are performing A union बी यूनियन सी मीन्स अगर हम पहले बी इंटरसेक्शन सी परफॉर्म करें देन उसका यूनियन परफॉर्म करें एक साथ, इट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट? मीन्स हम ए यूनियन बी परफॉर्म करें, ए यूनियन सी परफॉर्म करें और फिर उसका इंटरसेक्शन लें, तो इन बोथ कंडीशन वी विल गेट द सेम आंसर. सेम वाइज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हमारा ऑपरेशन कहलाता है union over intersection, and this is called the intersection over union, right? So a intersection b हम perform करें पहले और a intersection c हम perform करें then उसको union करें, so in both conditions we will get the same answer. Identity law में if you are doing the union of any set a with a null set, then we will get the uh, सेम सेट, राइट? मीन्स अगर किसी भी नल सेट के साथ हम किसी भी सेट का यूनियन परफॉर्म करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेट खुद ही आएगा, राइट? और अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन परफॉर्म करें यूनिवर्सल सेट के साथ, या यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन परफॉर्म करें किसी भी सेट के साथ, तो इस टर्म में भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेट खुद ही आएगा. तो ये जैसे आप एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में होता है कि अगर आप 0 को ऐड करें किसी भी नंबर के साथ तब भी वही नंबर खुद आता है, या आप 1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर के साथ तो तब भी वही नंबर आता है. तो सेम वाइज इन टर्म्स ऑफ सेट, तो जब हम नल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन परफॉर्म करेंगे तो वो सेट खुद आंसर आएगा. जब इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ परफॉर्म करेंगे इसमें भी वही सेट आंसर आएगा, राइट? डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, इफ यू जैसे लॉजिक में हमारे पास डबल नेगेशन लॉ होता है, ऐसी सेट में हमारे पास डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, राइट? तो डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है कि अगर आपने किसी भी सेट का एक कॉम्प्लीमेंट किया और अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट किया, तो हमारे पास जो आंसर होगा या आउटपुट सेट जो आएगा वो सेट खुद आएगा, राइट? जैसे लॉजिक के अंदर हम किसी भी प्रोपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एंड देन अगेन कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो वो प्रोपोजिशंस जो है वो खुद आ रही थी, राइट? सेम वाइज इफ यू आर परफॉर्मिंग ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन अगेन ए कॉम्प्लीमेंट, मीन्स हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होता है यू माइनस ए होता है, राइट? जो हमने कॉम्प्लीमेंट प्रीवियस स्लाइड में हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में रीड आउट किया है कि जो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है वो यू माइनस ए होता है, राइट? सो दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, राइट? देन अगेन इफ यू आर डूइंग यू माइनस ए, मीन्स अगर हम अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट करें, ये ए कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल हो गया, अगेन हम अगर यू को अगेन कॉम्प्लीमेंट करें तो यू माइनस स्टार्ट द ब्रैकेट यू माइनस ए, right? So when we when we will multiply the minus sign with this bracket, we will get u minus u plus a, right? So
रिमेनिंग जो हमारे पास बचा वो सेट खुद बचा। तो डबल कॉम्प्लीमेंट ना भी आपको ये बताता है कि जब आप एक सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं देन अगेन अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जो आंसर जो होगा वो सेट खुद होगा, राइट। आइडेंटिटी लर्न जो होगा जब आप एक सेट का उसी सेट के साथ यूनियन परफॉर्म करेंगे तो भी आंसर जो होगा वही सेट आंसर में आएगा, राइट। और जब आप इंटरसेक्शन करेंगे बिटवीन सेम सेट the output will be the same set, right? According to De Morgan's law, if we are applying A union B whole complement, right? So it is equal to A complement. This union will be changed into intersection and B complement. तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारा बताता है कि हम अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, राइट। और with the help of example you can prove it by yourself, right? A intersection B whole complement will be equal to A complement and this intersection will be convert into the A De Morgan's law A union B A union B whole complement is equal to, right, A complement intersection B complement, right. A complement intersection B complement and in terms of intersection this A intersection B whole complement, then separately we will put the complement over A, then this intersection will be converted into the union operation, this union and B complement, right. Absorption law A union B A union A intersection B is equal to A means if we are performing the A intersection B and then union with A, then we will get the A set, right. Let's suppose if we have said A 1 comma 2 comma 3, right. If we have said this one and we have said B is equal to 2 comma 3 comma 4 comma 5, right. Right. This is the A set 1 comma 2 comma 3 and B set is equal to 2 comma 4 comma 3 comma 5. A intersection B will be A intersection with B will be 2 comma 3 only we हमारे पास जो सेम है वो 2,3 सेम है। ए इंटरसेक्शन बी अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो सेट बनेगा वो 2,3 बनेगा, राइट। सो जब हम इसका यूनियन परफॉर्म करेंगे ए सेट के साथ, राइट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा आउटपुट वैल्यू जो आएगी वो 1 2 3 आएगी, राइट। 1 2 3 and it is same as the this one set. So we have proved it
ए इंटरसेक्शन बी और उसका फिर हम यूनियन परफॉर्म करें ए के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ए सेट ही आ रहा है 1 2 3, राइट। सेम वाइज अगर हम ए यूनियन बी परफॉर्म करें फर्स्ट, देन इंटरसेक्शन ए के साथ परफॉर्म करें, राइट, तो इस केस में भी हमारे पास जो सेट आउटपुट सेट जो आएगा या आंसर जो आएगा वो ए ही होगा। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ कहलाता है, राइट। हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ जो है यू नेगेशन मीन्स इफ यू आर परफॉर्मिंग यू माइनस यू, अगर हम यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस वजह से हमारे पास जो सेट होगा वो नल सेट होगा। लेट सपोज अगर मेरे अगर एक किसी पर्सन के पास 100 रुपये और वो पूरे 100 रुपये खर्च कर दे, राइट, तो उसके पास रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचता। तो सेम कॉम्प्लीमेंट में यही है कि अगर कॉम्प्लीमेंट ला यही कहता है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट यू माइनस यू अगर आप करेंगे, राइट, तो आपके पास जो रिमेनिंग सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा, राइट। और अगर हम परफॉर्म करते हैं नेगेशन ऑफ नल सेट, राइट, हमारे पास रिमेनिंग जो होता है वो यू सेट होता है। मीन्स इसका मतलब ये है कि नेगेशन जब भी हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम उस सेट को माइनस करते हैं यू में से, राइट। अगर हम नल सेट को यू में से माइनस कर देते हैं तो इस पर कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ता माइनस करने का। तो डेट इज वाई we will have only universal set, राइट। मीन्स एम्प्टी सेट को हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही रिमेनिंग रहा, राइट। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ कहलाता है। सेट डिफरेंस लॉ जो है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सेट डिफरेंस लॉ कहलाता है हमारा कि आप बी को ए में से माइनस करें या बी कॉम्प्लीमेंट करें।